Hello students, welcome to the biology world. In previous video we discussed about the first chapter and finished the first chapter, that is the living world and the living organism. We discussed about the living related to living organism. It is our first and basic chapter. We already discussed about the taxonomic categories, characteristic of living organisms, various type of taxonomical aids, and I hope you will very well understand that first chapter and revise your notes and fulfill your assignments. Now today we discuss about our second revision chapter, that is the chapter number 8, cell, the basic unit of life. So we already complete this chapter, but in the 3 days we talk about this 8th chapter. Now start the basic word, that is the main word of this chapter, that is cell. What is cell? In lower classes we already study this name, that is cell. So cell related all the things, cell organelles and prokaryotic cell, eukaryotic cell, basic differentiation between cells. We all talk about this chapter. So now start the basic word, that is cell. What is cell? We all know that Robert Hooke, which is the first scientist who discovered the cell. The cell is first discovered by Robert Hooke, and he observed in orc cell. But orc cell is a dead cell. So the Robert Hooke, first scientist who observed the cell in orc cell, but it is dead cell. Now the second scientist is Antoine Hooke, and it is discovered the live cell, or observed the live cell in microscope. Then third scientist is Robert Brown, who discovered the nucleus in cell. So this is the history of the cell biology. Robert Hooke is the first scientist which is observed the cell in microscope, but it is a dead cell. And Antoine Hooke observed the live cell, and Robert Brown observed the nucleus in cell. Now we discuss about the cell theory, which is the very important topic of your exam and also asked in our question pen. So cell theory is composed of two scientists. First is Matthew Slidon, and second one is Theodore Schwann. These two scientists made up of the cell theory. Now we discuss about the cell theory. जो Matthew Slidon, he is a botanist. Matthew Slidon is a botanist, and Theodore Schwann is a zoologist. So it is botanist and it is zoological scientist. So he also observed the cell in plant cells, and Theodore Schwann is observing animal cells. So Matthew Slidon observed in various plants and observed that plants are made up of various cells. Plants are made up of various types of cell and form tissues. Various types of cells are observed in many plant cells, and he also observed that the cell is together and form the tissue. The Matthew Slidon, the zoologist, is also observed in animal cell, and he observed that all the living organism outer side thin membrane is present, and this thin membrane is today known as cell membrane or plasma membrane.
all the living organisms, in outer side of the living organism, very thin layer is present, and this thin layer is today known as plasma membrane or cell membrane. So it is found in Theodorson in various animal cells. It is also observed in plant cells, study on plant cells, and observe that cell wall is unique characteristic of plant cell. So Matthew Sliden and Theodore Swan, both the scientists are observed in various plant cells and as well as animal cells, and conclude that all the living organisms made up of cells and their products, and it gives the hypothesis Matthew Sliden and Theodore Swan combined the conclude that all the living organisms made up of cell and cell products, and it is known as its hypothesis. But cell theory is failed because both are not answering the questions that how the new and where the new cells are formed. New cells जो हमारी बॉडी में है वो कैसे बनते हैं और कहाँ से आते हैं, वो क्वेश्चन है, उसका आंसर इन दोनों में से किसी के पास भी नहीं था. सो cell theory was failed because no one say that how and where the new cells from arise or form. So that Robert Brown, विर्शो जो कि एक साइंटिस्ट है, जो विर्शो साइंटिस्ट है, उन्होंने एक कंक्लूजन दिया और कहा कि जो न्यू सेल्स है वो हमारे जो पुराने सेल्स है उसको डिवाइड करते ही और उससे अराइज होते हैं. सो जो सेल थियरी का जो क्वेश्चन था जिससे सेल थियरी फेल्ड हुई थी, उसका आंसर है वो रॉबर्ट विर्शो है, उन्होंने दिया कि ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम pre-existing cells. और जो हमारे पुराने सेल्स है वो सेल्स डिवाइड होकर न्यू सेल्स है उसको फॉर्म करते हैं. सो उसको बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. सो विर्शो conclude that all cells are arise from pre-existing cells, and now the cell theory is completed. So pre-existing cells है उसको बोलते हैं omnis cellular, e-cellular. It is a Greek word omnicellular, e-cellular, जिसका मतलब ही होता है, जिसका मीनिंग होता है all cells are arise from pre-existing cells. So now cell theory is completed. In examinations, you ask write down the short note on cell theory. So now the cell theory is completed, and you have to write the three main points of cell theory जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. सेल थियरी के जो 3 पॉइंट हैं वो क्या है? फर्स्ट पॉइंट इज ऑल लिविंग organisms have cell. All living organisms have made up of cells and their products, जो कि हाइपोथेसिस थी. सेकेंड, सेल इज बेसिक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एंड जो थर्ड पॉइंट है
cells arises from pre-existing cells. So cell theory is now completed and give three main reasons. All living organisms made up of cell and their products. Cells is the basic unit of all the living organism, and third one is all cells are arise from pre-existing cells. So this is the cell theory which is completed for the statement given by the Rudolf Virchow, and cell theory which is failed जो पहले फेल थी मगर उसका जो आंसर है वो रुडोल्फ विर्शो ने दिया और नाउ इट इज कंप्लीटेड. सो इट इज द सेल थियरी एंड इट इज द आंसर ऑफ सेल theory. Now we discuss about the overview of cell. You students, you know that cells are two types, prokaryotic cell as well as eukaryotic cell. So prokaryotic cell जिसमें न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है, लैक ऑफ न्यूक्लियस, एंड जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है. जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गेनल्स है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्गी अपरेटर्स है, लाइसोसोम्स है, प्लास्टिड्स है, ये जो सारे के सारे ऑर्गेनल्स है वो यूकैरियोटिक सेल में हमको ऑब्जर्व होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में वो ऑब्जर्व होती नहीं है. सो इट इज अ वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. नाउ cells are also eukaryotic cells are also two types, that is animal cells and plant cells. And in our lower class we study plant cells and animal cells. We also differentiate between plant cells and animal cells. You have to know that plant cells prepare their food. So chloroplast is present in plant cells, but animals have heterotrophy, depend on plants. So it have no chloroplast, no plastids are present. So chloroplast is present in plant cells and animals is lack of the chloroplast. Now second membrane bound organelles is centrioles, which is helpful in cell division. So centrioles are present in animal cells but lack of the plant cells. So it is also one type of differentiation. Third differentiation, we know that all plant cells have unique characteristics. वो plants की characteristics है जो कि animals में absent है. So ये जो सारे के सारे basic differentiations है वो animal cells और plant cells में आपको पूछे जा सकते हैं और it is very basic questions. आप 9th 10th में भी इसे पढ़कर आए हैं. So now we discuss about the various type of organelles, and first we discuss about the cell membrane. जो कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसमें प्रेजेंट होते हैं. हमने यहाँ भी देखा कि जो थियोडोर श्वान है उन्होंने आउटर साइड एक थिन लेयर ऑब्जर्व किया जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं. उसको ही हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं. सो सेल मेम्ब्रेन इज outer membrane. It is made up of two components. First one is lipid and second one is protein. Two type of components are present. Lipid molecules जो है वो दो पार्ट में बना गया है. ये molecules कुछ ऐसा दिखता है. जो अपर पार्ट है उसको हम हेड बोलते हैं और जो लोअर पार्ट है उसको हम टेल बोलते हैं. दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है? तो कि जो हेड है वो पोलर है और जो टेल है वो नॉन पोलर है. पोलर और नॉन पोलर के बेस पर ये जो पोलर है वो हाइड्रोफोबिक है, नहीं ये जो है वो हाइड्रोफिलिक है और जो नॉन पोलर है वो हाइड्रोफोबिक है. इसकी वजह से ये जो लिपिड है वो ऐसे दो लेयर में अरेंज होता है, इसीलिए उसको बाय लेयर बोलते हैं. Outer side head is present and inner side tail is present. So lipid molecules जो है वो सेल मेम्ब्रेन में बाय लेयर के फॉर्म में है वो फॉर्म होते हैं. Now we discuss about the protein. Protein is also have two type. First one is integral protein and second one is पेरिफेरल प्रोटीन. यहाँ पे देखते हैं जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो कैसे, तो कि वो टोटली और पार्शियली
जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें एम्बेड हुए हैं, पार्शियली वो आउटर साइड है और समहाउ वो इनर साइड प्रेजेंट है। मगर जो पेरिफेरल है प्रोटीन, वो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी आउटर सरफेस पर ही प्रेजेंट है। सो इट इज इंटीग्रल एंड डिवाइडेड इनटू इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन। सो टू टाइप्स ऑफ molecules are present in plasma membrane, lipid molecules and protein molecules. Now we discuss about the function of plasma membrane. उससे पहले हम जो ये यहाँ पे ये ड्रॉ किया है, ये जो ड्रॉ किया हुआ है वो एक मॉडल के फॉर्म में सबसे पहले है वो सिंगर और निकोलसन ने प्रेजेंट किया था। सिंगर एंड निकोलसन ने ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको एक मॉडल के फॉर्म में प्रेजेंट किया है जिसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल जो कि टोटली हमको आइडेंटिफाई कराता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह से फॉर्म हुआ है। सो you have also asked in exam, write down the short note on fluid mosaic model which is given by Singer and Nicholson scientists. Now we discuss about the two function of the plasma membrane. The main function of the plasma membrane is transport of molecules. जो molecules है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जो ट्रांसपोर्ट होते हैं उसके बेस पर जो है वो उसका मेन फंक्शन है। सेल मेम्ब्रेन का जो मेन फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। दो तरह के ट्रांसपोर्टेशन है वो पॉसिबल है, एक है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। अब एक्टिव और पैसिव दोनों ट्रांसपोर्टेशन है उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू है वो अंडरस्टैंड करते हैं कि कोई एक आप स्टोन ले लीजिए, उसको जब आप ग्रेविटेशन फोर्स है उसके डायरेक्शन में जब आप उस पर फोर्स लगाते हैं तो आपके कोई एनर्जी यूटिलाइज नहीं करनी पड़ती, वो इजीली अपनी डायरेक्शन में वो मूव होता है। मगर जब वो स्टोन को आपको ग्रेविटेशनल फोर्स की ऑपोजिट साइड है वो आपको फोर्स करना है तब आपको बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है। सो ये जो एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स पर ही रिलेटेड है। जब कोई मॉलिक्यूल्स है वो अपनी लोअर से हायर मूव होता है तब एटीपी है वो यूटिलाइज्ड होती है। सो उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं जहाँ पे एटीपी है वो हमारी यूटिलाइज होती है। मगर जब आप हायर टू लोअर कोई ग्रेडियंट है, कोई मॉलिक्यूल्स है उस जो वो हायर टू लोअर है वो पास होगा तब कोई किसी भी प्रकार की एनर्जी है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो वो वहाँ पे एटीपी इज नॉट यूटिलाइज्ड। सो उस तरह का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। सो ये जो एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है उसका आप एग्जांपल देखें तो हमारी बॉडी में जो सोडियम पोटेशियम पंप्स है वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है उसका एग्जांपल्स है। मगर जो ऑस्मोसिस है जहाँ पे डिफ्यूजन होता है वो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के एग्जांपल्स है। सो स्टूडेंट्स, इट इज द मेन फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज फ्लूइड mosaic model which is given by Singer and Nicholson. The plasma membrane is made up of two main molecules, lipid and proteins. Besides this, carbohydrates and proteins are also present in plasma membranes. टू टाइप्स के हमने क्वेश्चंस है वो यहाँ पे पढ़े। फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो था सेल थ्योरी एंड सेकंड जो हमारा क्वेश्चन था वो था सेल मेम्ब्रेन। जो हम इसके अलावा जिस ऑर्गेनल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है सेल वॉल जो कि प्लांट सेल का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। सो आप देखिए कि जो प्लांट सेल्स में जो सेल वॉल है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो नॉन लिविंग है। सेकेंड वन कि जो प्लांट सेल्स की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से मेडअप हुई है। सेल्यूलोज उसके मेन फंक्शन है। उसके अलावा एल्गी भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है। तो जो एल्गी है उसकी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज है, गैलेक्टन्स है, मेनास है, ये जो सारे कंपोनेंट्स है उससे मेडअप हुई है, उससे फॉर्म हुई है। जो फंजाई है उसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट है मगर उसकी जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी हुई है, इसीलिए हम उसको काइटिनियस सेल वॉल है वो बोलते हैं।
सेल वॉल का इनर स्ट्रक्चर देखें आप तो उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी ये दो टाइप की सेल वॉल है वो प्रेजेंट है। प्राइमरी सेल वॉल है वो जो एकदम जर्मिनेट प्लांट है और उसमें प्रेजेंट होती है, जिसका फंक्शन ही है ग्रोथ होना। और जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो एकदम मैच्योर प्लांट्स है उसमें प्रेजेंट होती है। और सेल वॉल का फंक्शन देखें तो जो सेल वॉल है वो प्रोटेक्शन के लिए, मैकेनिज्म सपोर्ट के लिए है, वो बहुत ही यूजफुल होती है। वो जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सो ये जो है वो सेल वॉल के मेन फंक्शंस है। एक जो मेन कंपोनेंट जो सेल वॉल में प्रेजेंट है वो है मिडल लैमेला। मिडल लैमेला जो प्रेजेंट है वो कैल्शियम से मेडअप हुई है। और ये जो मिडल लैमेला है वो नेबरिंग सेल है उसको ग्लू की तरह एक दूसरे के साथ अटैच कर जो मॉलिक्यूल्स है, जो जितने भी मिनरल्स है, जितने भी कंपोनेंट्स है, उसको पास आउट करने का जो है वो फंक्शंस करती है। सो जो सेल वॉल है उसमें आप देखें तो आपको 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में सेल वॉल है वो पूछी जा सकती है। जो आल्गी की सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है, जो प्लांट सेल है उसकी सेल वॉल किससे बनी गई है। सो ये जो सारे के सारे है वो सेल वॉल के मेन कंपोनेंट्स हैं। आप देखें तो ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज which of the big smallest cell of the living organism. So we know that the mycoplasma, it is a very smallest cell of living organism, and the largest cell of living organism is ostrich egg. मगर वो जो लार्जेस्ट है वो कद वो हमारे विथ में है, वॉल्यूम में बहुत बड़ा है। मगर इन ह्यूमन बींग्स आप देखें तो जो 9 सेल्स है वो 9 सेल्स जो है वो लेंथ में सबसे बड़ा सेल है। सो आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट सेल्स भी पूछा जा सकता है। सो इट इज टोटली अबाउट ऑफ द सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स। सो वी डिस्कस अबाउट सेल थियरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, cell wall and the basic differentiations between animal cells and plant cells. Very carefully read, नोट्स आपको मिल गए हैं, प्रीवियस वीडियो भी देखें और ध्यान से ये सब नोट्स है उसको पढ़े। डेफिनेटली आप उसका आंसर लिख पाएंगे। जब भी आप सेल थ्योरी लिखने बैठे तो ऐसे ही मैथ्यूस लीडन और थियोडोर सॉन को 2 पार्ट में डिवाइड करें, उसकी हाइपोथेसिस को लिखें और लास्ट में जो सेल थ्योरी के मेन 3 पॉइंट्स है उसको लिखने का मत भूलना। जो सेल मेम्ब्रेन है तो सारे के सारे जो क्वेश्चन है उसको एक बार केयरफुली पढ़े, आंसर्स को केयरफुली पढ़े, लिखे और आप डेफिनेटली आंसर है वो क्वेश्चन एग्जाम में लिख पाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे होम। थैंक यू स्टूडेंट्स।